So we'll see clean energy transition plan for India. So what is energy security? First we remember energy security warrants the uninterrupted supply of energy at affordable price. So energy security warrants the uninterrupted सप्लाई ऑफ द एनर्जी एट अफोर्डेबल प्राइस. तो अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे होनी चाहिए. So India faces the twin challenges of meeting the aspiration of 1.3 billion population even if the safeguards in energy security and contributes to global effort to mitigation of climate change. So India faces twin challenges. One challenge is meeting the aspiration of 1.3 billion people. Second one is to mitigate the climate change. To meet the aspiration of 1.3 people and in safeguarding its energy security and contributes to the global effort to mitigate the climate change. दो twin challenges है. एक तो 101.3 बिलियन लोगों का हमें करना है एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है एंड दूसरा हमें क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल एफर्ट्स को डील करना है. एंड थैंक्स टू द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 the installed coal-fired thermal power plant. So there is a coal-fired thermal power plant generation capacity in India more than doubled from 2011 to 2017 तक. जो coal-fired thermal power plant की generation capacity डबल हो गया 94 से 192 gigawatt. So capacity is doubled from 2011 to 2017. This sharp increase in installed capacity has enabled the government to increase per capita electricity consumption by 37%. तो 37% से पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया एज वेल एज रिड्यूसिंग द पीक डिमांड डेफिसिट. पीक डिमांड पे डेफिसिट हो जाता था 9.8%, अब सिर्फ 1.6% डेफिसिट होता है. हाउएवर इंडिया हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी टू इट्स पीपल सिंस पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन स्टिल ओनली 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज का अगर 100 है तो इंडिया का सिर्फ 33% है. सो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली 1/3 ऑफ ग्लोबल एवरेज. कोल इज द ओनली फ्यूल दैट इंडिया हैज़ इट एबंडेंस. तो कोल इकलौता चीज़ है जो इंडिया में एबंडेंस है. देखो जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड द नेबरहुड डू नॉट परमिट रेडी एक्सेस टू द पाइपलाइन नेचुरल गैस. पाकिस्तान देखो पाइप्ड नेचुरल गैस नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. सो इंडियन नेबरहुड डू नॉट परमिट. सो द जियोपॉलिटिक्स इंडियन नेबरहुड डू नॉट परमिट रेडी एक्सेस टू पाइप नेचुरल गैस. तो जो हमारा TPP इट कॉन्ट्रीब्यूट 71%. सो हमें याद रखना है थर्मल पावर प्लांट कोर में है. क्यों? क्योंकि कोल इज द ओनली फ्यूल इंडिया दैट इज इन एबंडेंस एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया neighborhood do not permit ready access to the pipe natural gas. So we need to focus on high efficiency low emission thermal power plant that are underutilized. They are very high efficiency low emission thermal power plant that are currently unutilized. We need to accommodate them and there will be commissioning of the new 47 government owned thermal power plant. So coal therefore plays a vital role in India's ongoing efforts to achieve Sustainable Development Goal 7, which is to ensure access to affordable, reliable, sustainable, modern energy for all. So we talk about the estimated benefits. Since HELE TPP, high efficiency, low emission thermal power plant minimize the emission of the particulate matter SO2, NO2. Our transition plan offers operational, economic, and environmental benefits. So transitional plan offers operational, economic, and environmental benefits. So the implementation of the plan will enable India to safeguard its energy security and ensure efficient grid operation with lower water consumption, PM pollution, and CO2 emission. Ultimately, these plans demonstrate India's commitment to climate change mitigation by optimizing the use of our land, coal, water, and financial resources with the indigenous technology. The implementation of plans will enable India to safeguard its energy security, ensure efficient grid operation with lower water consumption, PM pollution, CO2 emission. Ultimately, this plan demonstrates India's commitment to climate change mitigation by optimizing the use of our land, coal, water, financial resources with indigenous technology.